सो महाशिवरात्रि के दिन इतनी महा बेइज्जती की है इंडिया ने पाकिस्तान की. इंडिया विनिंग बाय 61 रन्स. It was this game was a joke really. Yep, a no contest for sure. एक और संडे, एक और जिल्लत पाकिस्तान के लिए. बट व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक बाय मिस्टर जय शाह कि हमने उनको बॉयकॉट नहीं करने दिया ताकि हम ये जिल्लत देख सके. बट Yeah. मैच पे आते हैं. आई थिंक पाकिस्तान डिसाइडेड टू दे वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू लाइक चेज व्हिच इज बिजार बिकॉज आज तक उस ग्राउंड में इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी ने चेज करके नहीं जीता. इनफैक्ट द चेजिंग टीम्स वर ऑल आउट in all 4 matches. So I don't know what's the decision was. Yeah, I mean, I think Pakistan might have thought because थोड़ा बारिश गिरा था, there were conditions were different. There might be some dew. I don't know. They were expecting dew or something, but but clearly it went the wrong way for them. Yeah. What do you have to say about the playing 11 choices Playing there? 11, yeah, very good choices. I loved that they brought in Kuldeep Yadav, and that was expected for sure. But second thing I was thinking is, or I was worrying that they will bring Washington Sundar and they will leave out Rinku Singh, which they did not do, and I was glad that they did not. Rinku Singh ने जो fielding किया है और जो last over में जो batting किया है, it was very very important. Yeah, and I think they also trusted the quality of our spinners, right? And did not go with the quantity जो opposition team ने किया. But we have to talk about Ishan Kishan today, man. What an Oof. innings! पॉकेट डायनामो अभी क्या बोले इसके बारे में, क्या बैटिंग किया है यार. And he bats like this, we all know that. But on this surface, on this wicket, on this big ground, Colombo, it is not easy for a batsman, especially against spin. And in that situation, India was 0 for 1. We lost an all important wicket of Abhishek Sharma, and it was an important big stage. So given all of these factors, this innings is again one of Ishan Kishan's best. मोमेंटम बिल्कुल टूटने नहीं दिया उसने. लाइक ही काइंड ऑफ वेंट फ्रॉम द अदर एंड. शाहीन अफरीदी को जो उसने अटैक किया, एंड देन उनके जो स्पिनर्स हैं, जो प्रीमियम स्पिनर्स हैं, उनके शादाब खान और अबरार अहमद को जो नलीफाई किया है, जो ऑलमोस्ट लाइक इम्पैक्ट से निकाल दिया. तो दैट वाज अमेजिंग टू सी. सारे प्रीमियम बॉलर्स की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी. बिल्कुल. बट उसके बाद आई थिंक उसके डिसमिसल के बाद तिलक एंड स्काई काइंड ऑफ गॉट टुगेदर एंड एन इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिटवीन द टू. Yeah, I mean, I cannot. Initially, I was thinking, oh, Tilak is batting a bit too slow. But looking at the game itself and looking at the pitch and conditions, it was very important for both Tilak and Sky to just stay there, rotate, take singles, run a ball. And this was very important because these batsmen can, we all know, these batsmen can score big at will. But reading the situation, keeping their egos aside, and going with a team first approach, that was the highlight for me from Sky as well as Tilak Verma. Yeah, and I think थोड़ा सा probably पाकिस्तान missed a trick. उन्होंने जो उनका so called trump card है, उस्मान तारिक, काफी लेट आया वो. He bowled well, but I think he could have been definitely introduced earlier in the attack. The only point I think pressure में हम तब आ गए थे जब back to back wickets आए. तिलक वर्मा and हार्दिक पांड्या got out on the first ball. तो थोड़ा सा हमारा momentum रुक गया. Exactly, वो थोड़ा डेलिकेट सिचुएशन था इंडिया के लिए जब बैक टू बैक विकेट, स्पेशली हार्दिक पांड्या, बिकॉज वी नो वो कैसा मारता है स्पिनर्स को स्पेशली. एंड ही ट्राइड टू गो फ्रॉम बॉल 1 व्हिच डिड नॉट वर्क आउट टुडे, बट if he would have stayed there, at least 20 more runs to the total was definitely on the cards. Yeah, absolutely. And I think you live by the sword, you die by the sword, right? So but another under the radar knock by Mr. Shivam Dubey. Yeah, एक जो बैकफुट पे छक्का मारा, जो प्योर पावर, man, that was some hitting. And also Rinku Singh also finished very good with that 1-6 जो swipe किया, जो huge. It's Rinku Singh this time. 15 off the over now. India get past 170 with that hit. Shine premium bowler को. That was amazing to watch. We could also see a smile on Gambhir's face उस छक्के के बाद. But yeah, we finished well. 175 was definitely slightly above par as well मेरे हिसाब से तो. But bowling में I think जॉब हमने अपना काम पहले 2 ओवरों में ही कर दिया. हाँ, हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग नहीं कर पाया आज, बट जो बॉलिंग में नो लुक विकेट मिला है जो आज पहले ही ओवर में, मैक्स जो डॉक्यूमेंट्री बनने से रोक दिया है. और
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक इस पे अलग एक हमारी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए बट प्रोफेशनल बॉलिंग आई थिंक हर एक बॉलर ने चिप इन किया बुमराह वाज ग्रेट इन दैट Oof. सेकंड ओवर Yeah. जो उसने यॉर्कर डाला है साइम अयूब को Oh, that came out of nowhere. First over में ही ऐसा इतना lethal ball. Yeah. I feel bad for the batsman. या उसके बाद आई थिंक स्पिनर्स आने से पहले ही द डैमेज वाज डन वी वर ऑल लाइक थिंकिंग कि इंडिया के स्पिनर्स क्या करते हैं बट आई डोंट थिंक दे वर नीडेड दैट मच बट अगेन उसके बाद से इट वाज जस्ट कीपिंग थिंग्स सिंपल Yeah. सो Absolutely professional bowling performance. After those first 4 overs for rest of the bowling unit, it was all about not being too excited, not being too complacent, and that is exactly what Indian bowlers did. Professional bowling by the entire unit. Yeah. और लास्ट में तो मस्ती हो रही थी. अरे भाई रिंकू सिंह से बॉलिंग करवा रहे तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा रहे तो या आई थिंक वो थोड़ा because probably release of all the pressure because of the big game but it was great to see the team was enjoying it but yeah again this shows के कितना बड़ा गैप है दोनों टीम्स में समीर Yeah, I mean, skill set wise, going into this game, I would say Pakistan had a slight edge because they were more familiar with the conditions in Colombo. They had quantity wise, they had more spinners, but not quality wise. Quality wise, the skill set in both teams there is a vast difference there. Yeah, और काफी मतलब चर्चा भी हो रही थी you would have seen videos of like Sky bowling with a pause to give that practice of their so called trump card but yeah I think जब एक्चुअली मैच में देखने मिला कि कितना बड़ा गैप है दोनों स्किल सेट्स में सो या it is definitely a concerning sign for Pakistan cricket they now have to win their match against Namibia to qualify for Super 8 and we go from here to play against the Netherlands in Ahmedabad so yeah we'll be back with another review after that game. All right, cheers.